Hi guys, welcome to a new video. For something which is very important for you. You must be eager to understand कि क्या क्या process हम follow करते हैं या आपसे क्या क्या expected है while building a resume. Let's get started. Once you're done with your learning process, once you're done with your classes, maybe once you're done with your mentorship program and all, if you are joining our mentorship program, we reach to this step wherein you have to build your resume and all. We truly understand the importance of good resume. Of course, जैसे starting में भी बताया गया है, सारे sessions आपके सारा learning process आपका उसी हिसाब से डिज़ाइन है कि आप कैसे अपने resume में चीज़ें, अपने resume में projects, अपने resume में knowledge justify कर पाएंगे. The resume building is not just a copy paste process or not just a process which is same for all. So अगर आप एक क्लास में जिस आपके बैच में अगर 5 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट थे, so every candidate will have a different resume building process because every candidate comes from a different background. Every candidate have a different past experience level, past experience type and all. So उस हिसाब से ही सारे candidates का resume build up किया जाता है. इस example को बहुत ध्यान से सुनिए. मैं एक example आपके सामने present करने जा रहा हूँ. So let us take an example to help you understand better. There's a candidate जिसने business intelligence का course किया है. Say suppose Tableau or say suppose Power BI or for some matter data analytics, Python and all those things. The candidate is coming or the candidate is working in a manufacturing company. थोड़ा ध्यान से समझिए. अब once he is done with the course, of course he have all his past experience with the manufacturing field, right? Once he is done with the course, even though he has done the Python or even though he has done the Power BI or Tableau course, आफ्टर डूइंग द कोर्स अगर हम उसके साथ ये करते हैं कि हम उसके रेज्यूमे में बैंक या फाइनेंस का कुछ प्रोजेक्ट डालते हैं, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैंडिडेट टू जस्टिफाई द बैंकिंग नॉलेज बिकॉज ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बैंक, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फाइनेंस इंडस्ट्री. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. सो हम ये करते हैं कि एक कैंडिडेट अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, सो उसके रेज्यूमे में डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा का ही प्रोजेक्ट जाएगा. से सपोज आपने टेस्टिंग का कोर्स किया है फॉर एग्जांपल, सो एंड आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हैं. वंस यू आर डन विद द कोर्स, योर रेज्यूमे विल हैव टेस्टिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड. एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिए दैट एवरी इंडस्ट्री, बी इट मैकेनिकल, बी इट सिविल, बी इट कॉमर्स, बी इट आर्ट्स और फाइनेंस, एनीथिंग, every industry have the IT part of it. That is something which we leverage as a utility and accordingly the resume process is built up. अगर आपको नहीं समझ में आया, I'll request you to please go back in the video, listen to the video again. This is very important aspect in learning or in building your resume. So this is the strategy which we follow in building your resume. So your background or your domain knowledge will never be broken. We carry or we make or we request you to carry your background along in making your resume. I hope आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. आपने 3 साल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है और ट्रेनिंग लेके 3 साल आप सडनली बैंक का एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते. एंड of course don't worry about the domain. Every domain, as I mentioned, have the IT part in it. There are huge organizations in manufacturing field, those who have big IT divisions. There are financial companies, those who have big IT divisions. So every organization has some or the other IT part which is involved in that. That's how we are going to utilize that part and showcase in your resume. Yeah, as I mentioned, it's not just a copy-paste process. It's different for every candidate depending upon the background, depending upon the past experience. The resume process is built up. Right. Moving on, let us take an example of resume building process. Say suppose for our A-type category candidate, a fresher. Let us take an example. Consider a scenario. Sumit is a fresher student who completed the degree few months back or maybe a year back. The resume of Sumit don't need to have too many complexities like a big project. Also, since Sumit is just a fresher, there are no high expectations from freshers in the interview process. The interviewer will be more keen in understanding the fundamental concepts from Sumit. The
interviewer will be more interested in understanding the confidence level of the Sumit. He will also check the communication level of Sumit. If you are a fresher, we also help you get an internship certificate of around 6 months. This basically helps you in showcasing that it basically helps you in the interview process, because showcasing a training and showcasing an internship along with the training gives a big benefit. So you will get an internship certificate also after the course is done, which will help you basically in your interview process. This is again considering as a fresher. We will help in putting up the roles and responsibilities. We'll help in putting some projects in the resume of Sumit. This is a pretty simple process for Sumit as a fresher. So if you are a fresher and listening to this, please understand that some fundamentals of each technology is very important. Communication and your confidence level. These are the 3 important things which will easily help you clear your interview. Let's move on to an experienced professional candidate. The category B candidate. Category B, I hope you understand. Category B, I hope you understand, are working professionals. Working professionals working in IT, working professionals those who have worked in manufacturing, working professionals those who have worked as a lecturer. So all the people fall into this category. Next few slides are very important. While you listen to the slide or while you watch the video, I request you to pause the video in between and try answering the questions which have been asked in this video. Again, I am repeating, this is something which is very, very important. If you are listening this before joining the course, or if you are listening to this video after you have done the course, please pause the video, try to answer the questions what are asked. Let's take a scenario. Vishal is a working professional with 3 years of experience in support project or in manufacturing industry. And let us take an example that Vishal has completed AWS, any cloud computing course. Say suppose AWS, Azure or GCP. We of course offer all the 3 cloud computing technology courses. Now since Vishal have 3 years of experience, as mentioned in the previous slide, that Vishal has worked in support, but what we are going to do is we are going to showcase that Vishal has worked for 2 years or 3 years in cloud computing technology after he is done with the course and after he has completed all his efforts and all these things. Logically, if you understand, the interviewer or when Vishal is going to sit in the interview process showcasing 3 years of experience in cloud, the interviewer do not know that Vishal has not worked for 3 years. The interviewer looks at Vishal as a person who has worked for 3 years in cloud computing. So the interviewer have the expectation from Vishal that he have knowledge to justify up to 3 years of experience. So the questions from interviewer के सारे questions विशाल से उस तरीके के ही रहेंगे, ये कंसीडर करते हुए कि विशाल ने पिछले 2 या 3 साल क्लाउड कंप्यूटिंग में काम किया है. Right? Let's move on. Again, as I mentioned, please pause the video at the interval and try answering the questions. So, विशाल इंटरव्यू के सामने बैठा है. विशाल की इमेज इंटरव्यूअर के सामने एक ऐसी है that विशाल has worked or विशाल has real-time work experience for working in 2 or 3 years in cloud computing technology. So, here are some of the questions which starts. So, the interviewer, the first question, of course, which is a very generic question. The interviewer will say or ask, tell me about yourself. Please pause the video. Do not prepare and try speaking for 2 minutes. Put on the watch, 120 seconds. Try speaking about yourself. I hope you paused the video. If you have not paused, I'll request again. Please pause the video. Try speaking about yourself for 120 seconds. Suddenly you realize speaking for 2 minutes about yourself is something which is very difficult. You can speak 2, 4, 5 lines about yourself, but speaking for 2 minutes is something which is very difficult. Why it is difficult?
ये तो आपको खुद आपके बारे में ही बोलना है, फिर भी ये क्यों डिफिकल्ट लग रहा है आपको? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि उस रेलेवेंस में आप जहाँ बैठे हैं उसमें आपको आपके बारे में क्या क्या बोलना है। क्या आप जानते हैं आपको आपके बारे में क्या क्या बोलना है इंटरव्यू प्रोसेस में? अगर नहीं, दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव बीन रिट्रीटिंग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले आप अपने पॉइंटर्स बनाइए। फिर से मैं रिट्रीट करूंगा, अपने कोर्स ज्वाइन किया है, नहीं किया है या खत्म कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मेक डाउन द पॉइंट्स, प्लीज मेक द स्क्रिप्ट। क्या आपको ये नहीं लगता आप अपने बारे में अगर थोड़ा सा लिख के रखें और इंटरव्यू में जाने से पहले उसको अगर आप पढ़ के जाएं, आपको बहुत आसानी होगी उस बारे में बोलने में। होता यहाँ पे ये है कि आपको आपके बारे में इतना कुछ पता है कि आप वहाँ पे समझ नहीं पाते मैं क्या क्या बोलूँ। आपको पता होता है बट हो सकता है आप कुछ चीज़ें भूल गए, कुछ चीज़ें आप स्किप कर गए। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड। दैट इज वेयर यू फाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल रिटन स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाइए। हम एनकरेज करते हैं कैंडिडेट्स को रेज्यूमे बिल्डअप प्रोसेस के अंतर्गत या रेज्यूमे बिल्डअप प्रोसेस में कि आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए। हर चीज़ की स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि स्क्रिप्ट बनती एक ही बार है। एक बार आपकी फाइनल स्क्रिप्ट बन गई, जब भी आपका इंटरव्यू हो सकता है आप काफ़ी बार इंटरव्यू देना, जस्ट गो थ्रू द स्क्रिप्ट, बहुत ईजी जाएगा आपको। आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल रिटन स्क्रिप्ट। ओके, if you are done with that, if you again want to pause, please pause, again try answering about yourself. Okay, moving on to the next question. The next logical question from the interviewer to Vishal will be, Vishal, how many years of total experience you have? Vishal says, sir, I have total 3 years of experience in cloud and support services. The next logical question is, just think about the next logical question. Can the interviewer ask, Vishal, tell me what all things you did for 3 years? Please, ये चीज समझिए कि इंटरव्यूअर आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन पूछ सकता है, विशाल आपने 3 साल क्या क्या किया? Am I correct? फिर से पॉज करिए वीडियो को, समझने की कोशिश करिए 3 साल आपने क्या क्या किया जो आपने नहीं किया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको आपके बारे में सब कुछ पता होते हुए भी आप 2 मिनट नहीं बोल पाए। यहाँ पे आपको वो चीज बोलनी है जो आपने नहीं की है। दैट इज द रीजन वी हैव बीन reiterating. Please prepare on your own. Just taking the help from the trainer for everything. सर ये कैसे करूँ, सर वो कैसे करूँ, सर मेरा रेज्यूमे बना दो, सर मेरे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डाल दो। ये ट्रेनर या ये मेंटर या ये हम आपके लिए 2 मिनट में करके दे सकते हैं। वी हैव सो मेनी सैम्पल रेज्यूमेज, आपको 10 सैम्पल रेज्यूमेज दे सकते हैं। बट अगर इंटरव्यू ने पूछा आपसे आपने क्या किया 3 साल, दैट इज वेयर द स्क्रिप्ट इज नीडेड। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आपने 3 साल क्या क्या किया है, आपके पास बोलने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट का कंटेंट होना चाहिए? इस चीज को फिर से थोड़ा साइलेंट होकर सोचिए। क्या आपको लगता है कि आपने ये चीज बस ट्रेनर से पूछ ली, सर मुझे 10 मिनट का लिख के दे दो, आपने 10 मिनट में बोल दिया और हो गया? दिस इज नॉट दैट एज इजी। इसीलिए यहाँ पे सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लर्निंग स्टेज, आपके असाइनमेंट्स, अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम किया आपका वो प्रोग्राम, आपकी स्टडीज, आपका रिसर्च, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए वी सजेस्ट यू बिल्डिंग अ स्क्रिप्ट बनाइए। जैसे मैंने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ की स्क्रिप्ट बनाइए, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट बनाइए, टेल मी अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड फॉर 2 years 3 years उसकी स्क्रिप्ट बनाइए। आपने रेज्यूमे में 4 प्रोजेक्ट डाले हैं,
3 प्रोजेक्ट डाले, उन 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या क्या बोलने वाले हैं, मेक अ स्क्रिप्ट ऑफ दैट, उसकी स्क्रिप्ट रखिए अपने पास, बहुत हेल्पफुल है। स्क्रिप्ट आप समझ सकते हैं, ट्रेनर सिर्फ आपको लिख के दे दिया और आपने वो मगअप करके बोल दिया, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप जब कुछ चीज रिसर्च करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स किया है और आपने ये दिखाया है अपने रेज्यूमे में कि मैंने एक से सपोज डेटाबेस डिप्लॉय किया है ऑन क्लाउड। अब ये ट्रेनर आपको आराम से कुछ चीजें बता सकता है डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की ऑन क्लाउड, बट क्या ट्रेनर ने जितनी चीजें बोली क्या इंटरव्यूअर हो सकता है वही चीजें पूछे? ऑफ कोर्स नॉट। इंटरव्यूअर कुछ भी चीजें पूछ सकता है, इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग। दैट इज वेयर अगर आपने प्रैक्टिस की है खुद से, अगर आपने उसके बारे में रिसर्च की है, हर चीज प्रैक्टिकल करना मे नॉट बी नेसेसरी, बट पढ़िए उस चीज के बारे में। Maybe you can just search database configuration on cloud. Read all the things what you get out of it. Start making a script. Start making important points. Start writing on a piece of a paper. Ultimately, final एक script बनाइए, अपने पास रखिए उस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। Again, I am reiterating, just asking the trainer to make the project or to make the resume is not going to help you clear the interview. ट्रेनर डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको, हम आपको काफ़ी सारे सैम्पल रेज्यूमेज भी देंगे, बट ये जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, विशाल आपने 3 साल क्या क्या किया, 10 मिनट देंगे, इसके लिए यू शुड हैव स्क्रिप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स। लेट अस मूव ऑन। सो the same thing which I mentioned, you cannot just expect the trainer to tell you everything about the project, the script and all those things, and then you just mug up and speak those things for justifying 3 years of experience. Again, as I mentioned earlier, the script is important, and when you make the script, you can very easily explain, because आपने prepare किया है उस चीज़ के लिए। Again, जैसे मैंने reiterate किया, simple question of tell me about yourself, many candidates find it difficult, even though आप experience है, आप fresher हैं, it is little difficult. Hence, joining a course, learning from experienced professional is of course one very important aspect. But speaking in the interviews, preparing for the interviews, making a script is a बहुत important process है जो I hope आपको समझ में आया होगा. So, of course we understand that you want a good resume, but we are there to help you, we are there to guide you, but we request you to put all your efforts in doing a research and then finalizing the resume. So this will basically help you in getting up to a better level or better position. Yeah, I hope you understood the importance of that. In the next video tutorial, we'll speak about the mock interviews which we take for you. Thanks everybody for watching, and request you again, if you are not clear, please again watch this video tutorial. It's very important. Thank you so much for your time.